Hello everyone. Today we are going to start a new topic, that is chapter 6 NCERT class 10th, and the name of the chapter is life process. We see so many things around us, living things and non-living things. Why we call the things that is living thing, that is non-living thing? There are some characteristics which makes things living or non-living. Like living things have senses, living things have movement, living things have different activities, but non-living things do not move and other characteristics. These characteristics define the things about that whether they are living or non-living. For the survival of a body, for a survival of animal or human being, there are such processes which are very important for the survival of life. These processes is called life processes, or we can say that the process which maintain body function and necessary for survival is called life process. And the example of these life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion. We will discuss about one by one nutrition, respiration, transportation, excretion. Today we are going to discuss about nutrition. So what is nutrition? We eat food, we all eat food, and we know that food contains so many elements like carbohydrate, fat, minerals, vitamins, water. So what are these? These are called nutrients. So we get nutrition from food. So we can define nutrition. The process of taking nutrients from food is called nutrition. Is it clear? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने में कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, और यही सब कुछ हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप. First one is autotrophic nutrition and second one is heterotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Organisms which make their food by itself is called autotrophic nutrition. Organism जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम this type of nutrition is called autotrophic nutrition. Okay. Autotrophic nutrition, the example of autotrophic nutrition is plant. We all know that plants make their food by its own. What is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition, when the organism depends for their food on the other organism or plants, that is called heterotrophic nutrition. And the example of heterotrophic nutrition are animals and human beings. So first we will discuss about autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? I already told you that autotrophic nutrition occurs in plants. Auto means self, trophic means synthesize. Organism which synthesize their food by self is called autotrophic nutrition. How nutrition occurs in plant? How plants take nutrition? So the process by which the plants make their food, this is called photosynthesis. Plants trap the energy from the sunlight in the presence of carbon dioxide and water. This converts into a simpler complex, that is C6H12O6. This is the formula of glucose, and it gets oxygen. So we can say that what is photosynthesis? Then the process is which green plants convert simple inorganic materials like water and carbon dioxide into complex organic food material, that is glucose. C6H12O6
in the presence of chlorophyll and sunlight. That process is called photosynthesis. This is the reaction of photosynthesis. You have to learn it, that carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll makes glucose, that is C6H12O6 plus O2 and releases oxygen. Okay, this is the process of photosynthesis. Now, what events occur during photosynthesis? First is absorption of light energy by chlorophyll. First, the leaves, the plant absorb the energy, light energy in the presence of chlorophyll. After that, this light energy get converted into chemical energy and splitting of water molecule in hydrogen and oxygen. Water molecule, that is H2O, get splitted into two molecules, separate molecules. One is hydrogen and second one is oxygen. Then the second step occurs during photosynthesis is splitting of hydrogen molecule into two separate molecules, that is hydrogen and oxygen. First one is absorption of light energy by a chlorophyll. Second one is conversion of light energy to chemical energy and splitting of hydrogen molecule into two separate molecules, that is hydrogen and oxygen. Third one is reduction of carbon dioxide to carbohydrate. Reduction of carbon dioxide to carbohydrate. This glucose is sugar and sugar is carbohydrate. There is reduction of carbon dioxide process takes place. So, this is all about nutrition in plants, how plants make their food. So, we what we know, the definition of life process, mode of nutrition, what is nutrition and how plant gets their nutrition, about process of photosynthesis. Now, we will discuss about heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in which the organism depends for their food to other organisms or plants. This heterotrophic nutrition, the example of heterotrophic nutrition are animals and human beings. Right. This heterotrophic nutrition further divided into three different modes, that is saprophytic type of nutrition, parasitic type of nutrition and holozoic type of nutrition. What is saprophytic type of nutrition? Where the mode of nutrition in which organism depends on the other dead organisms. Okay, जब organism किसी dead organism के ऊपर depend करता है अपने food के लिए, then that mode of nutrition is called saprophytic nutrition. And the example of saprophytic nutrition are bacteria and fungi. Bacteria always depends on other things and fungi depends on, like you saw many times bread. When we store bread for the long time, it will there is a change, that a green fungus grow on it, that is called fungus. Okay. So, this type of nutrition is called saprophytic nutrition. Second one is parasitic nutrition, the mode of nutrition in which the organism obtain food from other organism without killing them. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे बिना उससे अपना फूड लेता है, ऑब्टेन करता है. ओके, तो इसका एग्जाम्पल है tapeworm and mosquito. Third one is holozoic nutrition.
The mode of nutrition that involves ingestion, digestion and assimilation of liquid or solid organic material, that is called holozoic nutrition. And the example of holozoic nutritions are animal, human beings. Okay, हम क्या करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लिक्विड फूड भी लेते हैं, सॉलिड फूड भी इन्गल्फ करते हैं और उसके साथ साथ हम डाइजेस्टिव फूड भी लेते हैं. तो डेट इज 3 डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आई थिंक इट इज क्लियर. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नाउ we will discuss about nutrition in human. How? So, nutrition in human. First, mouth. First the food comes into mouth. Then सेकेंड, माउथ के बाद फूड कहाँ आएगा बेटे? टीथ. These are, I am trying to explain you in a very easy manner that first we take food inside our mouth, then teeth comes into role play, and the function of teeth is chewing the food. What is the function of teeth? Chewing food. They breaks food into simple pieces, small pieces. After that, the role of tongue come. The role of tongue is rolling the food. टंग क्या करती है? फूड जो भी हम खा रहे हैं हमारे टीथ ने च्यू किया और टंग क्या करेगी? उस फूड को रोल करेगी. जब वो रोल कर रही होगी, देन हमारे माउथ में देयर आर सम सलाइवरी ग्लैंड्स. ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. These salivary glands secrete saliva. This saliva get mixes with the food and this saliva contains an enzyme called salivary enzyme. Okay, first we take food into our mouth. After that, teeth comes into play. They chew the food into the smaller pieces, and the main function of tongue is the rolling the food and mixes it with the saliva. Our mouth has salivary glands, and these salivary glands contain saliva. This saliva contain an enzyme that is called salivary amylase. Okay, and the function of the salivary amylase is break down the food into simple sugar. It breaks down the food into simple sugar. After that, food comes to the esophagus. After that, fourth is esophagus. Food comes to the esophagus, and taking food from mouth to stomach by this esophagus transfers the food to the stomach. Where it will transfer it? To the stomach. And by which process? That movement बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये जानना कि ईसोफेगस से स्टमक में जो खाना जाता है वो एक मूवमेंट के थ्रू जाता है. एंड व्हाट डज इट कॉल्ड? इट कॉल्ड पेरिस्टैटिक movement. Peristaltic movement. Okay. Then when food comes into the stomach, then what happens? Food is a large organ of our body. It gets expanded. फूड स्टमक क्या होता है? जब खाना अंदर आता है तो हमारा स्टमक क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है और खाना स्टमक के अंदर आ जाता है. स्टमक हैज़ ऑल्सो अ ग्लैंड. दैट ग्लैंड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड. स्टमक हैज़
gastric gland. There are so many glands which functions in the digestion of food. So stomach has gastric glands. These gastric glands secrete these gastric gland contains HCl, second one mucus and pepsin. Okay, when the food comes into the stomach, gastric glands get activated and these gastric gland contains HCl, mucus and pepsin. Now we will discuss what is the function of HCl, mucus and pepsin. HCl are acidic in nature. HCl are acidic in nature and its role is it makes the medium acidic which kills the bacteria in the food. हमारे फूड में जो भी खाने में के साथ बैक्टीरिया आए हैं तो HCl का काम क्या होगा, ये क्या करेगा, उन सारे बैक्टीरियाज को किल कर देगा जो खाने के साथ हमारे स्टमक तक पहुंच गए हैं और मीडियम को कैसा बनाएगा, एसिडिक बनाएगा. आफ्टर दैट द वर्क ऑफ पेप्सिन. पेप्सिन का काम क्या होगा, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड. पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स into amino acids. Food also contains some proteins and we cannot digest proteins directly, so the role of pepsin is that it breaks down the protein into amino acids. Amino acids are the simpler form of proteins. Clear? Then mucus. Mucus is the innermost layer of stomach which protect the stomach from the HCl. ठीक है, HCl क्या होता है, बहुत ही एल्कलाइन होता है. तो म्यूकस का काम क्या होता है, जो हमारी स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. डेट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले खाना हम माउथ में लेंगे, माउथ के बाद हमारे टीथ का काम होता है, टीथ उस खाने को च्यू करते हैं, सिंपल पीसेस में तोड़ते हैं. आफ्टर दैट टंग जो होती है वो खाने को रोल अप करती है, उसमें हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें कि सलाइवा होता है और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि उस फूड के साथ मिक्स होता है. फूड के साथ जब मिक्स हो जाएगा तब वो क्या करेगा, उस फूड को सिंपल शुगर में तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा. आफ्टर दैट क्या होगा, ये जो फूड है ये ईसोफेगस में आएगा. ईसोफेगस में आने के बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक में जाएगा. अब स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होंगे. स्टमक के ग्लैंड्स क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है. स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, दैट इज HCl, mucus and pepsin. The function of HCl is it is acidic in nature. It makes the alkaline, it makes the medium acidic. It makes the medium acidic and it kills the bacteria which comes along with the food. After that, pepsin breaks down the proteins into simpler compound, that is amino acid, and the function of mucus is to protect the stomach inner lining from the HCl. After that the food gets transferred to the small intestine. Then the food gets transferred to the small intestine. This is the site for the complete digestion. Small intestine is the site of the complete digestion. Here the complete digestion of food takes place. When the food comes into the small intestine, then the glands of liver get activated. The liver produces juice, that is bile juice and bile salt. What is the function of bile juice and bile salt?
liver secrete two juices. First one is bile juice, second one is bile salt. And what is the function of bile juice and bile salt? The function of bile juice, it makes the food alkaline. Bile juice makes the food alkaline, and function of bile salt is break the large fat globules. A food contains fat also and we cannot directly digest fat. हमारे फूड में जो फैट होता है हम उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फैट को भी क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है, इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा. वो कौन ब्रेक डाउन करेगा? बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन करेगा. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट जाएंगे, वेदर इट इज प्रोटीन, वेदर इट इज शुगर, वेदर इट इज फैट, ऑल विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाएंगे वो अपने सिंपलर फॉर्म में बॉडी के अंदर डाइजेशन के टाइम पे ब्रेक डाउन होंगे, ताकि हम उनको डाइजेस्ट कर सकें. हम डायरेक्टली फैट को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? बाइल सॉल्ट का काम होता है जो भी हमारे बॉडी के अंदर फूड में फैट कंटेन जितना एलिमेंट होगा उसको वो क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देगा. किस में ब्रेक डाउन करेगा? फैट गेट कन्वर्टेड इनटू, ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, and the process by which it happens, that process is called emulsification. The breakdown of fat into fatty acid and glycerol is called emulsification. क्या प्रोसेस होगा? वो emulsification होगा. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? emulsification. ये आप याद रखना कि फैट के ब्रेक डाउन प्रोसेस को हम बोलेंगे इमल्सिफिकेशन, जिसमें कि फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होगा. देन लीवर के बाद गॉल ब्लैडर, नेक्स्ट जो है ऑर्गन वो है गॉल ब्लैडर. इट विल गेट एक्टिवेटेड, ये भी एक्टिवेट होगा. अब गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस एंड सॉल्ट. इसके अंदर क्या होता है? बाइल जूस एंड सॉल्ट होता है. इसके अंदर भी ये भी सेम काम ही करेगा. बाइल जूस क्या करेगा? आपका जो फूड है उसको एल्कलाइन बनाएगा, और जो हमारा बाइल सॉल्ट है वो फैट को सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा. आफ्टर दैट पैनक्रियाज भी अपना काम करेगी. पैनक्रियाज क्या करेगी? पैनक्रियाज जो है ये दो एंजाइम सिक्रीट करेगी. लाइपेज, एक एंजाइम सिक्रीट करेगी लाइपेज और दूसरा एंजाइम सिक्रीट करेगी ट्रिप्सिन. क्लियर? पैनक्रियाज सिक्रीटेड टू एंजाइम्स, फर्स्ट वन इज लाइपेज एंड ट्रिप्सिन. व्हाट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ लाइपेज एंड ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स proteins into amino acids. ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ देगा. और लाइपेज का काम क्या होगा? इट ब्रेक्स एमल्सिफाइड फैट. ये जो हमारा यहाँ पर फैट एमल्सिफाइड फैट था जो कि लीवर के बाइल सॉल्ट ने सिक्रीट करके फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा था. एमल्सिफाइड फैट जो था उसको क्या करेगा? यहाँ पर एमल्सिफाइड फैट को ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देगा. ओके. पैनक्रियाज में क्या होगा? पैनक्रियाज में टू एंजाइम सिक्रीट होंगे, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेगा. एंड लाइपेज क्या करेगा? जो इमल्सिफाइड फैट थे जिसे बाइल सॉल्ट ने इमल्सिफाइड किया था, उन इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देगा. दिस इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में
एक बहुत छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई. व्हाट वी कॉल्ड इट, विलाई. हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. एंड द फंक्शन ऑफ विलाई इज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. ये क्या करते हैं, जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं और एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो ब्लड में आ जाता है. एंड ये जो ब्लड होता है ये पूरे डाइजेस्टेड फूड को, एब्जॉर्ब फूड को कहाँ लेके जाता है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. इट विल सर्कुलेट food to each and every cell of the body. So we can say that villi are a finger-like projection inside a small intestine. These increases the surface area of absorption. Villi supplied the food to the blood vessels and these blood vessels take the food into the each and every cell of the body. This here is the complete digestion of food takes place. If the question comes, the main site of, which is the main site of complete digestion, your answer will be small intestine, because the complete digestion takes place in the small intestine. After that, the absorbed food gets into the blood. Okay, the food which cannot be absorbed or the waste material, it will get transferred to the large intestine. कहाँ आ जाएगा फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा. जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जितना ज़्यादा वाटर बॉडी एब्जॉर्ब करेगी वो कर लेगी और एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारी बॉडी में एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा. कहाँ चला, बाहर निकल जाएगा. ओके, सो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा. हमने जो आज पढ़ा दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस. The process which is necessary for the maintenance of our life and for the survival is called life process. And the examples of life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion. Today we discuss about nutrition. The mode of nutrition are of two types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition occurs in plants and heterotrophic nutrition occurs in animals and human beings. After that we discuss about the process of photosynthesis, that is autotrophic nutrition, in which we discuss about the definition of photosynthesis and events occurs during photosynthesis. Okay, the process in which the green plant converts simple inorganic material H2O carbon dioxide into complex organic food material, that is glucose, in the presence of chlorophyll and sunlight, that is called photosynthesis. And the events occurs in the photosynthesis are the absorption of light energy in the presence of sunlight. After that, this absorbed light energy get converted into the chemical energy and the water molecules splitting into two separate molecules, that is hydrogen and oxygen, and reduction of carbon dioxide to carbohydrate. And in heterotrophic nutrition there are three types of heterotrophic nutrition: saprophytic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. After that we discuss about the nutrition in human beings, how it begins from mouth and ends to the large intestine. First we get food into our mouth. In our mouth, when we take food in our mouth, our teeth break down the food into small pieces, and then the tongue comes into the roll. It rolls out our food and mixes it with saliva. This saliva contains salivary enzyme, and the function of salivary enzyme is break down the sugar into simpler
sugar. Okay, after that food comes to the esophagus. From esophagus it gets transferred to the stomach by peristaltic movement. After that, when the food comes into the stomach, the surface area of stomach get expanded. In stomach there are gastric glands. These gastric glands secrete three gastric juices, HCl, mucus and pepsin. We discuss about the function of HCl, mucus and pepsin. After that, the food get transferred into small intestine. Small intestine is the complete digestion site. When the food comes into small intestine, after that liver gets activated. It secretes two types of juices. First one is bile juice and second one is bile salt. Bile juice makes the food alkaline and the bile salt break the large fat globules into fat globules. That process is called emulsification. Gallbladder store bile juice and salt. After that pancreas come into role. Pancreas secrete two enzymes, trypsin and lipase. Trypsin converts protein into amino acid and lipase it breaks emulsified fat into fatty acids and glycerol. Small intestines have finger-like projections that is called villi. With the role of villi are it expands the absorption area for the digested food and the blood vessels take food from small intestine and take to the food to each and every cell of the living organism. After that the base product get transferred to the large intestine where the water get absorbed and the base material removed from the body by a anus. This is all about the nutrition in humans, or we can say this is all about the nutrition. So in our next topic, this is the first part of this chapter. In next part we will discuss about respiration, transportation and excretion. Okay. So if you like my channel, then please do subscribe and like, share my channel.